वो किसी शायर ने कहा है, तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवां कहाँ लुटा। मैं बताऊंगा इन्हें कारवां कहाँ लुटा है। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला हूं। जी प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, अच्छा डिस्कशन आप चलने दें। मैं इनकी बातों को सुन रहा था और मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। माननीय सदस्य सैयद नासिर हुसैन जब इस बारी राज्यसभा में चुने गए, जब ये इनके जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्नाटक के बेंगलोर में था। कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें प्रचित किया गया। ये लोग, बैठाइए इनको, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो। आपस में बात नहीं, प्लीज प्लीज आप बैठो, बैठो प्लीज प्लीज। आपस में बात नहीं, आपस में बात महोदय, आप चेयर को संबोधित करें। हम लोग नहीं, चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय प्लीज, आप चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय, आज देश के लिए गौरव का दिन है। देश के आम मुसलमान के लिए, देश के गरीब मुसलमान के लिए, देश के पसमंद बीच में टोका टोकी नहीं होगी, तो दोनों के लिए होना चाहिए। फिर तो प्लीज 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 नासिर जी, प्लीज प्लीज। झूठ बकवास सब सभापति महोदय नहीं जा रहा, आप रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, बैठ जाइए। 10-20 अधिक हो तो हम नाम हर कदम कदम पर खड़ा यहाँ पातक है, हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है, घातक है। देवता सदस्य दिखता है पर कमरे में वह गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें आज मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के दिवस चुप रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक है। वह मूक सत्यहंता कम नहीं बधिक है। चोरों के जो हीतु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देता है, या चाटुकार जन की सेवा लेता है, यह पाप उन्हीं का हमको सर प्लीज कंक्लूड सर। भारत अपने ही घर में हार गया। चर्चा शांतिपूर्वक चले, इसलिए ऐसा कोई आरोप न लगाया जाए जिससे राज्यसभा की गरिमा गिरे, और ये जो आरोप लगाया गया है इससे राज्यसभा की गरिमा गिरती। 1 मिनट सर प्लीज। माननीय सदस्य नासिर हुसैन पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना कहा कि ये जीते तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इनमें इन पर क्या आरोप है? नारे तो किसी और ने लगाए, मगर नारे क्या लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। क्यों लगे वो ना। मिनट आई क्लैरिफाई। He has already submitted his authenticated. My name is called. My name is taken, sir. Sir, my name is taken. Sir, I just given. Sir, that is what. Sir, when this incident happened. Sir, that is sir, what. Sir, when this incident happened, none of the people, those who are present, except one journalist, I don't know from where he came, only he heard this. After that, nobody Sir. else heard this. Then, even then, on air, I told my government. I requested my government that if somebody has done that, he has to be arrested and tried according to the law of the land. Personal allegations are made. You give a chance to clarify it. Just 10 seconds. I will do that, 10 sir. seconds. I will do that. I will do that. After the speaker completes, I'll just clarify, get a clarification. You now only 30 seconds. Huh? Sir, 1 minute, sir. After the Honorable Home Minister spoke and said Honorable Member could give an explanation, the chair gave him a chance, he spoke about it. I've heard it. Many of us heard it. Post which you have called Honorable Member Haq to speak. Then Sukendra Shekhar Roy, the member from TMC, Honorable Member,
asked the same point. But after the Home Minister spoke, the chair has given him a permission. He stood and spoke. He even went to the extent, I'll recall what he said. I'll recall what he said. If he has not said it, let him correct me. He said, none of us were present in the house. There was one journalist. Action was. All this was said after the permission was given. How many times for one reference will he have to be given the chance to speak? He was given the chance. He spoke. We all heard it. Matter closed. Then you said, called up Sukendra Shekhar Roy. How many times, sir? Please, and if Sri Nadimul Haq doesn't want to speak, call the next person. He is not getting up. Let somebody else speak. You said, oh yes, he didn't get up. 3 times the chair called. Speak. Let him speak. Let him speak. The chair called, he didn't get up. The chair called, he didn't get up. When the chair called, he didn't get up. Stop banging the chair. Stop banging the table. Stop banging the table, Derek. Stop banging the table. So the chair called and then the honorable member 3 times the chair. Please check the record. Please check the record. Please check the record. Please check the record. I want to say it. Please check the record. The chair called him 3 times. The chair called him 3 times. He didn't even get up. Chair called him 3 times. He didn't even get up. Then move to the next speaker, yeah. What is this? He wants to speak 3 times. You want to be called 3 times. Is there some order? Chair, please, if Honorable Member Haq wants to speak, since he was called, because the chair gave him the permission, let him speak. कृपया आप सब लोग बैठ जाए. कृपया बैठ जाए. And if he doesn't speak, how many times will he have to go back to that person? Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please. देवगौड़ा जी खड़े हैं. मैं एक सूचना के साथ आपको निवेदन कर रहा हूं. Honorable Chairman, yes, to speak on this bill. I am only waiting when the chairman comes because he has made an announcement yesterday for the former Prime Minister. 10 minutes we have allotted. There should not be any disturbance. For the first time after 17 years, I don't want to quote what has happened in the other house. It is not proper to mention anything what has happened in the other house. I know something. I don't want to speak. For 17 years, only 1 minute or 2 minutes, because I was only one member. I suffered. I was humiliated. Now, yesterday, the chairman has given at least 10 minutes to speak. I am waiting when the chairman comes. I will speak on this bill. There is no need of any hesitation. I am going to stand by what the Parliamentary Affairs Minister yesterday spoke. Up to 1 o'clock, I heard your speech. Up to 1 o'clock, I heard your speech. I know what has happened. I am going to speak. There is nothing to fear. I am the person who fought for the cause of the Muslims. India was there. But today, my stand, what is my stand? I am going to make it clear to the country. There is no hesitation. I'll speak. Wait, madam, please. There is no question. I am waiting for the chairman to come. That's all. I am going to speak. धन्यवाद. आप बैठे मानिए, सुनिए. प्लीज पहले मुझे सुनिए. प्लीज लिसन में. आपके समय में पूर्व चेयरमैन ने जो व्यवस्था दी, आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया. इसके बाद में नाउ आप वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम.